Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio cast from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Banerjee. Our sentiment is looking quite upbeat. Equity markets are rising. Yesterday, US equity markets closed higher. Asian equities are rising. Dollar index is lower. US bond yields are lower, trading at the lowest level since mid-October, 4.7 on the 10-year. और जिसके कारण we are seeing the Asian currencies rally as well. USD INR offshore में is trading around 83.20, 21 levels. Not a significant down move, but nevertheless a 7-8 पैसा kind of a gap down क्योंकि कल almost it closed at the all-time high. 83.29 का all-time high है. कल it closed around 83.28, 75 levels. Almost 83.29. So वहाँ से it's backing off. So the question is now, क्यों ये move दिखा गया in the last few hours? कल जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग था उसके पहले वी हैव टू गो इन द इवनिंग यूएस ट्रेजरी केम आउट विद अ रिपोर्ट कि जो बोरोइंग कैलेंडर है, जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है टिल डिसम्बर, दे केम आउट विद दैट एंड दैट क्लियरली इंडिकेटेड दैट दे विल बी फोकसिंग ऑन शॉर्टर डेटेड सिक्योरिटीज रादर देन लॉन्गर डेटेड सिक्योरिटीज. मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इशुएंस कम रहेगा और शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इशुएंस ज्यादा रहेगा टू फंड देयर डेफिसिट. द मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग और फियरफुल कि दे माइट डू द ऑपोजिट, जिसके कारण यील्ड्स हैड रिजन. सो आफ्टर दैट अनाउंसमेंट वी सॉ फॉल इन द यील्ड्स एंड देन द डेटा जो था यूएस से, एक तरफ जैसे जोल्स वर नाइस, एडीपी नंबर्स वर बेटर, दूसरे तरफ जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यूएस में. दैट फेल डीपर इनटू कॉन्ट्रैक्शनरी जोन एंड दैट्स समथिंग विच हिट द बॉन्ड डील्स ऑल्सो, क्योंकि एक तरफ लोअर इशुएंस देन एंटिसिपेटेड, दूसरे तरफ दिस शॉकर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डेटा दैट हर्ट द sentiments and drove the bond prices higher and the bond yields lower. And then came the Fed. Fed basically did not say much. They only said this from that they are going to be on hold for an extended period of time. Second, जो increase हुआ है bond yields में, जिसके कारण it's going to have a negative impact on the economy and they will be keeping a close watch on it. So this statement basically was construed by the market. मतलब मार्केट ने इसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि रेट हाइक का तो कभी कोई चांस ही नहीं है. द रेट हाइक्स आर ऑल डन. Now, because the interest rates have risen, और यूएस में जो कंज्यूमर lending rates है, जो commercial lending rates है, they are linked to these long-term rates, and they have also risen to record territories. जिसके कारण, and plus now a lot of the loans will be coming up for refinancing and the fresh loans will be issued at a higher rate. जिसके कारण we could see the impact of these higher rates on the economy, on the consumer lending, on the commercial lending, etc. So this was seen as a sort of a dovish statement. तो एक bad manufacturing, lower issuance और उसके साथ ये Fed का slight tilt towards a bit of dovish, not really a majorly dovish but slight dovishness. और वो जो context एक बना हुआ था, वो context के हिसाब से कि yield should go lower, it simply aggravated that and yields fell further. जिसके कारण we saw a sharp rebound in the global currencies against the US dollar. Even dollar yen, जो Bank of Japan meeting के बाद एक sharp rally किया था, has retraced more than 50% of the entire rally. So the question is now, what is the trade ahead? 83.30 looks to be now safe. It would require some kind of a major trigger to break that 83.30 mark on the spot. 83 is the support, so 83.30 is the range. Now as long as this range is intact, you can continue to buy near 83.10, stop below 83, and then again look to sell near 83.30, stop above 83.32 on the spot. That trade can happen. Short straddle can be done, but keep an eye on this range, क्योंकि अगर range break हो रहा है 83 के नीचे या 83.30 के ऊपर, then you have to either have a stop loss or take a hedging trade. मतलब अगर breakdown हो रहा है तो buy a put option, breakout हो रहा है तो buy a call option.
और तीसरा ये है कि इंट्राडे में द रेंजेस आर वेरी नैरो. आज गैप डाउन से ओपन होगा, बट कितना इंट्राडे में मूव करेगा वी हैव टू सी. हो सकता है सम सेलिंग में हैपन बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल बैकड्रॉप. बट फोकस ऑन ग्लोबल करेंसीज, यूरो आना, जीपीआरआर एंड जेपीआरआर, क्योंकि एक्शन पैक्ट वो रहेगा. येन आईएनआर में कैरी ट्रेड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो spread है between the spot and the futures month is quite high. So it's that differential is trading at record levels, highest level since 2000. So जिसके कारण lot of people want to short yen INR and hold it and roll it over. But remember, such trades are very risky trades, क्योंकि यहाँ पे if the market goes up sharply, जैसे आज gap up से open होगा, it can cause big losses. इसके लिए if you're trying to do a carry trade, short, hold and roll, then ensure that you have very high risk appetite, and second, do very small quantity, and third, very important, have a stop loss, because you just cannot continue to hold this position if it keeps on going against you. So these three things must be adhered to, otherwise don't do a carry trade, just stick to intraday trading. हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं यूरो आईएनआर, जीपीएनआर और जेपीआईएनआर में, बट कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो दिस 3 रूल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. वंस अगेन आई विल रिपीट, कीप योर पोजिशन साइज स्मॉल, stick to the stop losses, and for these trades you need to have a high risk appetite. और आज important data point ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग है, सो जीबीपी आईएनआर इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. और कल तो वी हैव द यूएस जॉब्स रिपोर्ट. सो कीप योर फोकस ऑन यूरो आईएनआर, जीपीआईएनआर, जेपीआईएनआर, क्योंकि वॉलेटिलिटी वहां पे है, इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे रहेगा. सो दैट्स इट folks, this is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.